बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डॉक्टर एन मुर्गेश जो बुक है उसके पैरामेडिक्स के लिए पढ़ते हैं। ये बुक सफिशिएंट बोला जा रहा है हम लोग के लिए। क्या क्या टॉपिक है देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स, स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स और स्केलेटन, ब्लड, lymphatic system, cardiovascular system, respiratory system, urinary system, muscular system, physiology of muscle, central nervous system, autonomic nervous system, organ of special senses, skin and regulation of body temperature, digestive system। उसके बाद है accessory organs of digestion, metabolism, diet and vitamins, endocrine system, reproductive system और process of reproduction। टोटल 23 चैप्टर है। चलिए देखते हैं, धीरे धीरे सारा चैप्टर पढ़ना है, कंप्लीट करना एक के बाद एक चैप्टर। चलिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन। Anatomy is the science that deals with the structure of the body and the relationship of various parts to each other। Anatomy क्या है? तो ये स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी और उसके रिलेशनशिप किसके साथ? तो वेरियस पार्ट्स ऑफ ईच अदर, इसके डिस्कस करते हैं। ठीक है, एनाटॉमी द साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट्स टू ईच अदर। योर नॉलेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड देयर फंक्शन। एक सिंपल डेफिनेशन भी हम लोग बोलते हैं कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनाटॉमी इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है? तो साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स, हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज, ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स, मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स, आर्थ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, स्प्लैंक्नोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। डिस्क्रिप्टिव टर्म यूज्ड इन एनाटॉमी, स्प्लैंक्नोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गन्स कहते हैं, न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। अब क्या है? डिस्क्रिप्टिव टर्म यूज्ड इन एनाटॉमी, the arrangement of various parts of the body may be symmetry. Example, limbs, eye, ear and lungs, their arrangement on the right side and left side are similar. Asymmetric, example, a spleen and liver, the spleen lie entirely in the left side, liver lie mostly on the right side. Asymmetric। उसके बाद है the study of human body is done in anatomical position. In this position the body is erect, head facing forward, arm by sides and palm of hands facing forward. The following are a few important terms which are used to describe the human body. Median line, mid sagittal plane, the central plane which divides the body into two halves, that is right and left। median line क्या होता है? तो mid sagittal plane होता है जो central plane है, that divides the body into two halves, right and left। बीच से एक लाइन जो कि आधा लेफ्ट को आधा और राइट को आधा में बांट देता है। फिर मीडियन क्या है? मीडियन क्या है? तो नियरर टू द मीडियन लाइन, नियरर टू द मीडियन लाइन। मीडियन और सैजिटल लाइन यहाँ फिगर में दिखाया गया है, मीडियन और सैजिटल लाइन, सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल और यह है मीडियल। डिस्क्रिप्टिव टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी, लेटरल मींस अवे फ्रॉम मीडियन लाइन, सुपीरियर नियर टू हेड, inferior nearer to the foot, anterior nearer to the front surface of the body, posterior nearer to the back surface of the body, proximal nearer to the origin of the structure, distal away from the origin of the structure, superficial nearer to the skin surface, deeper from the skin surface। लेटरल ठीक है, सारा कुछ हो गया। डीप मतलब डीपर फ्रॉम द स्किन सरफेस। अब आते हैं मूवमेंट्स एट जॉइंट्स। The following are a few descriptive terms used to convey the movement which occurs at various joints. Flexion क्या है? movement where similar surfaces come nearer to each other. This reduces the angle between two bones. Example, bending of forearm at the elbow। ठीक है, ये फ्लेक्शन। एक्सटेंशन क्या है? तो movement where similar surfaces go apart. Here the angle between two bones is decreased. It is the opposite of flexion। Example, straightening of the bent arm, यानी कि हाथ को मोड़ना फ्लेक्शन और हाथ को फैलाना सीधा करना एक्सटेंशन। ठीक है, ऑपोजिट है। Adduction, यह मूवमेंट which brings the limb forward midline। Adduction क्या है? तो यह मूवमेंट which brings the limb towards midline। ठीक है, मिडलाइन की तरफ लिम्स को लाना adduction है। Abduction, this is the opposite of adduction where the limb is drawn away from the midline, यानी कि दूर ले जाना, बॉडी के पास लाना adduction, बॉडी से दूर ले जाना abduction। Rotation, यह मूवमेंट around the central axis involving 360 degree। यह मूवमेंट around the central axis involving 360 degree, तो उसको रोटेशन कहेंगे। Median rotation, यह रोटेशन towards medial direction, यह रोटेशन towards medial direction को medial rotation कहेंगे। Lateral rotation, यह rotation towards lateral direction। medial rotation होता है rotation towards medial direction and rotation towards lateral direction को lateral rotation।
सर्कमडक्शन ये क्या है? द मूवमेंट इन्वॉल्विंग फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, abduction, extension, adduction, which occurs in a sequence. This movement occurs in shoulder, hip, circumduction. उसके बाद है physiology. Physiology is the science of life which deals with normal function of the body. It explains how various systems in the body function together normally as a single unit. तो physiology हम लोग physiology में क्या पढ़ते हैं? Normal functions of the body को पढ़ते हैं. It is the science of life which deals with the normal function of the body. ये क्या करता है? Explain करता है बॉडी फंक्शंस को, जितने भी सिस्टम्स हैं हम लोग बॉडी में, सबके बारे में. तो इट एक्सप्लेन्स हाउ वेरियस सिस्टम इन द बॉडी फंक्शन टुगेदर नॉर्मली एज अ सिंगल यूनिट. द सब्जेक्ट्स मैटर ऑफ फिजियोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ वेरियस सिस्टम लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब आते हैं सेकंड चैप्टर, सेल्स के बारे में. तो सेल्स. The cell is the smallest unit of living tissue. Cells of different tissues perform different functions. A cell is made up of following structure. तो cell क्या है? Smallest. हम डिफाइन करते हैं the structural and functional unit of life जो है वो cell होता है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ? The cell is the smallest unit of living tissue. Cells of different tissues perform different functions. A cell is made up of following structures. Cell wall. It is the external boundary of the living cells. ये क्या है? It is the external boundary of the living cells. It is a three-layered structure made up of lipids and proteins. It measures approximately 70 angstrom in thickness. The cell wall allows the diffusion of substances into and out of the cell. Cell wall, it is the external boundary of the living cells. External boundary of the living cells. It is a three-layered structure made up of lipids and proteins. ये three-layered structure है जो कि lipids और proteins से बना रहता है. It measures approximately 70 angstrom in thickness. The cell wall allows the diffusion of substances into and out of the cell. आगे है nucleus. It is the largest structure present almost in the center of a cell. It is largest structure present almost in the center of cell. It is more or less spherical in shape. Spherical होता है shape में. It is bounded by nuclear membrane. The nucleus contains nucleolus and chromatin. दो चीज होता है nucleolus और chromatin. Nucleolus क्या है? तो it is a highly coiled filamentous structure. Coil है, highly coiled और filamentous है. Filamentous structure है present in the nucleus. It is not surrounded by a membrane, but it contains numerous granules. Nucleolus is the site of ribosomal RNA ribonucleic acid synthesis. तो न्यूक्लियोलस में जो है राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है जिसको राइबोनुक्लिक एसिड कहते हैं. राइबोनुक्लिक एसिड आरएनए फुल फॉर्म क्या है? राइबोनुक्लिक एसिड. अब आते हैं क्रोमेटिन. क्रोमेटिन क्या है? दीज आर फाइब्रस थ्रेड्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स. तो क्रोमेटिन क्या है? दीज आर फाइब्रस थ्रेड. ये धागे हैं, फाइबर की तरह धागे हैं. कहाँ रहते हैं? तो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. They are composed of DNA. ये DNA से बने रहते हैं. They are composed of DNA, deoxyribonucleic acid and proteins. इसमें कुछ प्रोटीन भी रहता है. The chromatin threads carry genetic information. ये genetic information carry करते हैं. At the time of cell division, chromatin condenses and into chromosomes. जब cell division होता है तो chromatin condense होकर chromosome बनाते हैं. The number of chromosomes is constant for a particular species of organism. हर एक organism में chromosome different होता है. ठीक है, अलग अलग species के organism में chromosome का number जो है different होता है. The number of chromosome is constant for a particular species of organism. और जो सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे जितने भी ह्यूमन बीइंग है सब में क्या है? 23 पेयर क्रोमोसोम है. इन मैन देयर आर 23 पेयर्स ऑफ 46 क्रोमोसोम. 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम हो गए. 46. अब आते हैं साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज द रीजन लाइन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जगह है वो साइटोप्लाज्म है. Cytoplasm contains cell organelles like endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria, lysosomes, and centrosome. Mitochondria, Golgi complex, nucleus, ribosomes, endoplasmic reticulum, lysosomes. Mitochondria, Golgi complex, nucleus, ribosomes, endoplasmic reticulum, lysosomes. फिर आता है microsomes. These they are extremely small bodies present in the cytoplasm. They can be separated by centrifuging या टिश्यू को सेंट्रीफ्यूज करने पे सेपरेट हो जाते हैं. दे आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूजिंग या टिश्यू होमोजेनेट. तो टिश्यू होमोजेनेट्स एट वेरी हाई स्पीड 10,000 आरपीएम में जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो माइक्रोसोम्स जो है सेपरेट हो जाएंगे. माइक्रोसोम्स कंटेन्स फर्स्ट राइबोसोम्स, ग्रेनुलर मैट्रिक्स. दो चीज रखते हैं माइक्रोसोम्स, राइबोसोम्स और ग्रेनुलर मैट्रिक्स. राइबोसोम्स आर कंसर्न्ड विद प्रोटीन सिंथेसिस. ग्रेनुलर मैट्रिक्स जो है कंटेन्स करता है ऑक्सीडेजेस व्हिच जनरेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन ऑक्सीडेजेस जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरेट करते हैं. कैटालिसिस भी होते हैं जो कि कन्वर्ट्स करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर. अब है ऑर्गेनल्स ऑफ साइटोप्लाज्म.
Following are the important organelle present in cytoplasm. पहला है endoplasmic reticulum. It is the most extensive cell organelle present in cytoplasm. It consists of two membranes which are separated by a space. Endoplasmic reticulum is of two types. They are granular or rough surfaced endoplasmic reticulum containing ribosomes. The ribosomes are the site of protein synthesis. फिर है granular or a smooth surfaced endoplasmic reticulum. This does not contain ribosome. This type of endoplasmic reticulum is concerned with fatty acids and steroid synthesis. Also, they store and release calcium. Golgi apparatus क्या है? तो इट इज ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर एंड कंटेन्स वेसिकल्स. कप शेप स्ट्रक्चर है और ये क्या करता है? वेसिकल्स कंटेन करता है. इट इज सिचुएटेड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड अपेक्स ऑफ द सेल. इट इज कंसर्न्ड विद कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन prior to their secretion. ये प्रोटीन को कंसंट्रेट कर. फिर है माइटोकॉन्ड्रिया दे अकर इन साइटोप्लाज्म एट वेरिएबल नंबर. साइटोप्लाज्म में अलग अलग नंबर पे पाए जाते हैं. फ्यू हंड्रेड्स टू फ्यू थाउजेंड्स. 100 की तादाद पे हो सकते हैं, हजारों की तादाद पे हो सकते हैं. द माइटोकॉन्ड्रियम इज कंपोज्ड ऑफ two layers of membrane. They are first an outer layer which is smooth, second an inner layer fall into seeds of tubule called cristae. फर्स्ट एन आउटर लेयर जो कि स्मूथ होता है और दूसरा जो अंदर वाला लेयर इनर लेयर जो रहता है उसमें क्या होता है? फोल्डिंग्स होता है. फोल्डेड इनटू सीड्स ऑफ ट्यूब्यूल्स कॉल्ड क्रिस्टे कहता है. बोथ दिस लेयर इंक्लूड्स या सेंट्रल कैविटी कॉल्ड मैट्रिक्स. इन दोनों के बीच में जो बोथ दिस लेयर्स इंक्लूड या सेंट्रल कैविटी, सेंटर में एक कैविटी बनाते हैं जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है. द माइटोकॉन्ड्रिया आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड सम राइबोन्यूक्लिक एसिड. माइटोकॉन्ड्रिया किस किस चीज से बना रहता है? प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स एंड सब राइबोन्यूक्लिक एसिड. They also contain some important enzyme systems. The mitochondria are chiefly concerned with cellular oxidation. Mitochondria are made up of protein, phospholipids, and some ribonucleic acids. They also contain some important enzyme systems. The mitochondria are chiefly concerned with cellular oxidation. फिर आता है लाइसोसोम. लाइसोसोम क्या है? They are a small spherical or oval bodies होते हैं surrounded by a single membrane. ये single membrane से घिरे रहते हैं. They vary in number and contains a variety of hydrolytic enzymes. The lysozyme break down bacteria and cell debris engulfed by the cell. The damaged intracellular organelles are also broken down and digested by lysosomes. Centrosome. It is a small rod-shaped body found near the nucleus. It plays an important role during cell division. The centrosome is surrounded by a radiating fluid-like structure. It contains two centrioles. तो centrosome it is a small rod-shaped body found near the nucleus. न्यूक्लियस के सामने होता है. It play an important role during cell division. इस सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सेंट्रोसोम क्या करता है? तो is surrounded by a radiating thread-like structure. It contains two centrioles. Microtubules ये क्या है? तो they are straight hollow cylinders. With a diameter of about 200 angstrom. They are concerned with the maintenance of cell shape. They are also associated with movements of cilia, flagella and mitotic spindle. बात है. अब functions of your cell. Cell का क्या क्या काम है? The following are the important functions performed by a cell. पहला है ingestion and assimilation. The cell ingests chemical substances like amino acids from intracellular or interstitial fluid. These substances are used to build up complicated substances like proteins. पहला काम है ingestion and assimilation. The cells ingests chemical substances like amino acids from intracellular or interstitial fluid. These substances are used to build up complicated substances like proteins. Growth and repair. Cells का काम है growth करना और repair करना. Growth and repair. The ingested and assimilated materials are used to synthesize new protoplasm. This leads to increase in size and growth of the cell. Also, worn out parts of the cells are replaced by this process. Metabolism ये क्या होता है? This involves two processes, anabolism and respiration. Anabolism में क्या होता है? Anabolism in which the ingested and assimilated food material is used for growth and repair. Growth और repair के लिए जो यूज होता है तो anabolism कहते हैं. Catabolism क्या होता है? In which food materials are broken down to release energy for various functions of the cells. जब एनर्जी रिलीज करने के लिए वेरियस फंक्शंस को करने के लिए फूड को ब्रोकन डाउन करते हैं तो कैटाबॉलिज्म कहते हैं. रेस्पिरेशन. सेल्स का अगला काम है रेस्पिरेशन. इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ब्लड टू द टिश्यूज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड फंक्शंस ऑफ द सेल. तो रेस्पिरेशन. अगला फंक्शन है एक्सक्रीशन. So the cell eliminates waste products resulting from catabolism into the interstitial fluid.
These products are carried by blood for elimination, the lungs and kidney, irritability and contractility. The cell is active by means of these two functions. The cell responds to any stimulus like physical, chemical, thermal, electrical, mechanical by contracting, or the impulse impulse is conducted as that occurs in your nerve cells, or the impulse is conducted as that occurs in your nerve cells. Reproduction, अगला काम है cells का reproduction करना. After growing to your optimum size, the cell divides into daughter cells. Reproduction of cells occur by mitosis और meiosis. दो तरह से सेल रिप्रोडक्शन करते हैं, एक माइटोसिस करके और दूसरा मियोसिस करके. माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस, दिस अकर्स इन 4 स्टेजेस, नेमली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. प्रोफेज में क्या है? तो इनिशियली द सेंट्रोसोम divides into two. Centrosome divides into two. These two new centrosomes move away from each other to the 2 ends of the nucleus, forming 2 poles. सबसे पहले सेंट्रोसोम डिवाइड किया और मूव करके अपोजिट पोल में चला गया. प्रोफेज का ये कहानी है. दूसरा मेटाफेज. मेटाफेज में क्या होता है? नाउ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन disappears. The centrosome arrange themselves around the center of the cell. The chromosomes arrange themselves around the center of the cells. They get attached to the thread-like structure of the centrosomes, which are now at the 2 poles of the cell. एनाफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज आ गया, फिर एनाफेज आया, फिर टेलोफेज, और टेलोफेज के बाद डॉटर सेल्स बन गया. स्टेजेस इन सेल डिवीजन बाय माइटोसिस. एनाफेज में क्या हुआ? द क्रोमोसोम नाउ divide longitudinally into 2 equal parts. The 2 groups of chromosomes move away to the poles and get arranged around the centrosomes. Telophase, the cell becomes narrower at the center to facilitate division. The thread-like structures disappear. The nuclear membrane reappear. Nuclear membrane appears again. At the end of telophase, telophase के end में क्या होता है? The cell division also, the cells divides. Also the chromosomes disappear into the nucleus. The daughter cell grow and in turn reproduce by mitosis. During mitosis, each chromosome duplicates, so the daughter cells contain 46 chromosomes. Meiosis. It is a process of reproduction which occurs in higher animals. In man, it involves the fusion of first a spermatozoon from the male, which contains 23 chromosomes, and second ovum from female, which also contains 23 chromosomes. The spermatozoon and ovum are also called gametes. The spermatozoons and ovum are also called as gametes. The fusion of these two male and female gametes results in the formation of a zygote, which has the normal number of 46 chromosomes, 23 pairs. This leads to mixing of the hereditary determinants or genes from the male and female. अगला है determination of sex. One pair of chromosomes from father and one pair from the mother are sex chromosomes. These sex chromosomes determines the sex of the child. In the female, the sex chromosomes are the same and are called XX. In the male, they are different and are called XY. The chromosome from each pair determines the sex of the child. If the child has X chromosome from the mother and X chromosome from the father, it is a female XX. If the child has X chromosome from mother and Y chromosome from father, it is male XY. अब आते हैं थर्ड चैप्टर, द टिश्यूज. A group of cells having the same origin, similar shapes, and a specific or common generalized function is known as a tissue. A group of cells having the same origin, similar shape, and a specific or common generalized function is known as a tissue. Classification of tissues. The tissues are classified into 4 major groups. They are epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, or nervous tissue. These 4 groups of tissues are called elementary tissues. Elementary tissues. Epithelial tissues के बारे में समझते हैं. Epithelial tissues form the covering or lining to the free surfaces of the body. They perform vital functions like protection, excretion, glandular secretion, and absorption. The epithelial cells contains minimum extracellular material, but they are arranged on the basement membrane. Epithelium is further classified as simple epithelium and stratified epithelium. Simple epithelium, it consists of a single layer of cells. It is further divided into squamous, cuboidal, columnar, ciliated, glandular. It consists of a single layer of cells. It is further divided into squamous, cuboidal, columnar, ciliated, or glandular. Squamous or
Pavement epithelium. It consists of flat cell arrangement, edge to edge, as in mosaic. It consists of flat cell arrangement, edge to edge, as in a mosaic. This type of epithelium covers the alveoli of lungs, pericardial, pleural and peritoneal cavities. दूसरा है cuboidal epithelium. Here the cells are cubical. They are arranged over a basement membrane. It is found in the distal convoluted tubule of the kidney. Columnar epithelium. It consists of tall, pillar-like cell arranged on a basement membrane. It is found in lungs and ducts of glands. Squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, ciliated columnar epithelium, unicellular glands, multicellular glands, transitional epithelium. Various types of epithelium. Ciliated epithelium. The cells may be cuboidal or columnar, but they contain hair-like structures called cilia present in the free border. Example, cells lining the trachea. It consists of cylindrical or columnar cells. It is present in secretory glands like glandular epithelium. It consists of cylindrical or columnar cells. It is present in secretory glands. Salivary gland and breast. Salivary gland में और breast में होगा. The glands are of two types. Unicellular होते हैं और multicellular होते हैं. The multicellular glands are again classified as endocrine glands, which do not contain a duct. They secrete hormones. Endocrine glands, which contains a duct, they secrete enzymes. Goblet cells are specialized glandular epithelium cells. They secrete mucus or mucin. The goblet cells are more numerous in stomach, colon, and trachea. Stratified epithelium. It is also called as compound epithelium. It consists of several layers of cells. It is present in surfaces where there is considerable wear and tear. Depending on the type of cells present, stratified epithelium is further classified into first stratified squamous epithelium, stratified cuboidal epithelium, stratified columnar epithelium. आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.